in our last class, that was our first class, and in the last class we have seen that we have covered these topics, that are what is data structure, types of data structure. There are two types of data structures, that are linear and non-linear data structures, and I have shared one more video that is on operations of data structures. Now here the operation of data structure, basically the aim was to make you understand these two terms, that is underflow and overflow. These two terms are very important. Okay, that's why there are some basic terminologies related to the data structure. I have written in the screen, as you can see. The first one is data. What is that? Means the elementary value or the collection of values. Okay. Then the data items, that means what? A single unit of value is known as data item. Group of data items, you can say, or like group of items, that means what? Subordinate data items. Suppose there is one employee who is having his name, and his name is having first name, middle name, and the last name. So this is called the subordinate. Now comes the elementary items. That means what? Data items that cannot be divided into sub items. For example, the ID of employee. Entity and attributes. Basically, entity is a class of certain object is represented by an entity, and it consists of different attributes. Okay, these things doesn't come, but still I had mentioned it. I will love to directly come to the important topic, that is algorithm. Okay, algorithm. Now you can ask me that ma'am, what is algorithm, and many more questions you can have, right? So when I say this algorithm, I basically mean some important topics that you need to know about this. First of all, let me tell you the definition. Algorithm क्या है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि whenever we are giving some input and that input is converted to output, right? That input is converted to what? Output. Okay, but in between this input and output there is something, right? In between this input and output there is something that is called what? That is called the algorithms. This algorithm runs in between this input and output, and we get our output because of this algorithm. So now the basic question that comes in your mind, that is, what is an algorithm? Computational procedure. Okay, this is the first highlighting point. Second highlighting point is what? Takes input, takes input. Now these inputs can be of what? This input can be values, or we can say set of values. Okay, this one of
Okay. Produces some values or set of values. Okay, produces some values or set of values, and these are what? Nothing but output. ठीक है, इतना समझ आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से. आई वांट टू से कि एल्गोरिदम एक ऐसी चीज़ है जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में काम करता है. ठीक है, अभी एल्गोरिदम है क्या? कंप्यूटेशनल प्रोसीड्योर है. अब ये कंप्यूटेशनल प्रोसीड्योर क्या है? मतलब इट्स डूइंग सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. computational procedures, there are some steps, there are some rules that is followed by these algorithms. There are different types of algorithms, and those different types of algorithms are having its own way of work, way to work. ठीक है, सब एल्गोरिदम का अपना अपना सर्चिंग प्रोसेस होता है, सबका अपना अपना ट्राइवर्सिंग प्रोसेस होता है. तो ये कंप्यूटेशनल प्रोसीड्योर फॉलो करते हैं हर एक एल्गोरिदम. और ये क्या करता है एल्गोरिदम? कुछ इनपुट्स लेता है यूजर से. ठीक है, दिस इनपुट्स कैन बी वैल्यूज और वी कैन से इट एज सेट ऑफ वैल्यूज. एक वैल्यू लेगा या एक से ज़्यादा वैल्यू लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमें रिटर्न में या तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा. यही है आउटपुट. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट. तो इसको हम लोग जी स्टॉप करें तो क्या है? वी कैन से कि एल्गोरिदम एक सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट टू आउटपुट. क्या है? सीक्वेंस of computational steps that transform the input to output. Okay, हो गया. There are some few points I have said. अब इसको हम लोग एक अगर सिंपल पैराग्राफ में लिखना चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि an algorithm is a computational procedure that takes some inputs or set of values, that takes some inputs in the form of values or set of values and produces some values or set of values as output. Full stop. उसके बाद लिख सकते हो कि so an algorithm is a sequence of computational steps that transforms the input to output. Okay, very good. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गो. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम. अनएम्बिग्युअस. Number 2, input must be specified. Then
output. Output means what must have one output. उसके बाद क्या होता है? फाइनाइटनेस. उसके बाद feasibility and independent. Okay. Acha, for diploma students you don't have to explain these points. Suppose they're asking you the characteristics, you just write the points and leave it, you will get a full marks. It's one of the most important part, that is types of algorithm is a best case. Number 2 is a worst case. Let me write, I will explain you. Then number 3 comes average case. Okay, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस. बेस्ट केस कब होता है? जब हम कोई एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं और उस वो एल्गोरिदम सबसे कम टाइम लगा रहा है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. दैट मीन्स इट इज़ टेकिंग द मिनिमम टाइम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. दैट इज़ अ बेस्ट केस. वर्स्ट केस क्या है? मैक्सिमम टाइम ले रहा है. एक एल्गोरिदम इज टेकिंग, वन एल्गोरिदम इज टेकिंग द मैक्सिमम टाइम. ठीक है, मैक्सिमम टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्स्ट केस. इट इज टेकिंग व्हाट? मैक्सिमम टाइम, max टाइम. ठीक है, और ये बेस्ट केस में क्या होता है? एज आई सेड, मिनिमम टाइम लेगा. एल्गोरिदम टेक्स द मिनिमम टाइम. algo takes minimum time. और यहाँ पर क्या है? algo takes maximum time. एवरेज केस में क्या है? ना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पा रहा है एल्गोरिदम, ना ज़्यादा मॉडरेट. इट फॉल्स समवेयर इन बिटवीन दिस बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में होता है. Average case takes all random inputs and calculate the computation time for all inputs. इसका एक फॉर्मूला भी है, all random case time divided by total number of cases, but it's not required. तुमको बस इतना जानना है, एवरेज केस मतलब जो एल्गोरिदम ना उतना बेटर आउटपुट दे पा रहा है, ना उतना खराब आउटपुट दे पा रहा है. इट फॉल्स समवेयर इन द मिडल ऑफ द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस. ठीक है, वेरी गुड. अब आ जाते हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक,